सर अब कितने कल प्रेशर से पे क्या करते हो? पढ़ाएंगे सर? मे बी एग्जॉस्ट वाल्व। सर स्टार्टिंग रिवर्सिंग पढ़ा दीजिए पहले सर। ठीक। इस महीने वो है सर, टेस्ट एग्जाम है सर। ओके ओके। अभी बंकर एंड प्रेशर टेस्ट कर लेते हैं फिलहाल, जल्दी जल्दी आधे घंटे में, हाँ। सो ओके सर। व्हाई वी डू इट? check To check the the integrity integrity of of the pipeline and the walls. bunker line, right? To check integrity. Okay, that means no holes, no leakages, gasket सब बराबर है, and to avoid any accidents during bunkering. आंसर ऑल्सो कि वो पाइपलाइन होल्ड कर पा रहा है इतना प्रेशर, इसके लिए भी करते हैं क्या? हाँ वही ना। ठीक है। ओके। Then when we do it? Every 6 months. Good. Every 6 months we are doing it. ठीक है। एज पर कंपनी पॉलिसी, ठीक है, एवरी 6 मंथ्स, और नॉर्मली एनुअली तो करना ही करना है। ठीक है, सो 6 मंथ्स और एनुअली यू कैन से इट। ठीक है। नाउ हाउ वी डू इट? हाइड्रोलिकली। मीडियम ऑयल। ओके। ऑयल यूज करोगे नॉर्मली यार्ड में, जब हम करते हैं यार्ड में हम वाटर यूज करते हैं, दैट इज योर ड्राई डॉक एंड ऑल। तो जिसने वाटर किया है वो ड्राई डॉक में हुआ था। नहीं नहीं सर, सीलिंग का टाइम खाली हमारे लाइन में सर मैनिफोल्ड पे ही अरेंजमेंट था उसको ड्रेन करने के लिए ओके ओके, देन दैट इज गुड। पानी को। ओके। सो नॉर्मली ये रहता है आपका, नॉर्मली ऑयल से करो, ठीक है, बिकॉज ऑयल ऑलरेडी आपके पास है, एंड देन यू कैन डू इट। देन कितने प्रेशर पे करोगे? 6 बार, 5 बार। सर 5 बार। रिलीफ कॉल का जो प्रेशर होता है 1.5 द उसको मैक्सिमम 1.5 वर्किंग करना। प्रेशर। ठीक है। 1.5 द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। ठीक है। सपोज द पाइप डिजाइन प्रेशर इज 4 बार, देन टेस्ट आपको करना पड़ेगा 1.5 द 4 बार, दैट इज 6 बार। ठीक है। मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इज योर डिजाइन प्रेशर। ठीक है ना। यस। कंफ्यूजन ना रखने के लिए डिजाइन प्रेशर लिख लो। डिजाइन प्रेशर। ठीक है। Now, what all precautions you will take while doing this test? Similar to your bunkering, है ना? Because बंकरिंग। अगर ऑयल रहेगा लाइन में और लीक हो गया, so there are chances of oil spillage. ठीक है। तो every soap up equipments, all these things, your यस। sorry, so your कपल प्लग्स एंड ऑल। plugs are in place and all those things has to be checked, right? So क्या बोलते हैं यार उन plugs को? I forgot the name. Scupper plugs, कपल right? प्लग्स। कपर प्लग्स So है कपर। ship should be in port first of all. ठीक है, पोर्ट में ही करना है ये, not in anchorage, not anywhere, and weather should be calm. Then you plug all deck scuppers. What else you do? Soap up equipment ready करते हो यस सर। बंकरिंग के टाइम पे, सोप अप आइटम्स टू बी रेडी। सॉरी, हैव एडिक्वेट मैन पावर। ये बंकरिंग के टाइम पे भी आप ये स्टफ बोल सकते हो ना। सो नॉर्मली चीफ इंजीनियर इज योर सुपरवाइजर, ऑब्वियसली उसी के अंडर आएगा सब कुछ। देन सेकंड इंजीनियर एंड फोर्थ इंजीनियर will be your, they will be performing this test. Okay, fourth engineers will do in by normally working तो सारा फोर्थ इंजीनियर को ही करना है ना, वॉल्स खोलना कौन सा, लेकिन विद
सेकंड इंजीनियर, उसको पता होना चाहिए क्या क्या किया आपने, ठीक है। थर्ड इंजीनियर विल बी स्टैंड बाय नियर पंप, दैट मीन्स इंजन रूम में, ठीक है। एंड देन यू शुड हैव योर मोटरमैन्स ऑन ऑल दोस थिंग्स टू चेक। सपोज एक तरफ से आप प्रेशर टेस्ट कर रहे हो तो अदर साइड somebody should be standing, isn't it? Even in bunkering, right? When you're bunkering from port side, starboard में किसी को रखते हो स्टैंड बाय, ठीक है। Yes, sir. So Yes, similar sir. here also, some people should be there, like your deck fitter should, sorry, engine fitter should be there with you on the manifold, and one motorman may be on the other end side, which is not right now in use, ठीक है। Now check remote start and stop of your pump रहता है, फ्यूल ट्रांसफर पंप का रिमोट स्टार्ट एंड स्टॉप रहता है। Yes, sir. Then communication should be good. That means your walkie-talkies should be there with you. Same things you can give while your बंकरिंग है, बंकरिंग Bunkering के प्रोसीजर। time. ठीक है, बंकरिंग में बस ये आ जाएगा, पेपर वर्क रेडी करो, कितना आ रहा है उसके लिए प्लान करो, बंकर प्लान बनाओ, इन विच टैंक यू शुड टेक, हाउ मच यू शुड टेक, डिस्कस इट विद चीफ ऑफिसर ऑल्सो फॉर शिप स्टेबिलिटी, एंड यू शुड ट्राई टू मिनिमाइज द मिक्सिंग, है ना। मिक्सिंग मिनिमाइज करने के लिए Yes, sir. you have to think about it, okay। Then put a new pressure gauge onto your bunker manifold, calibrated one, okay। Now inform the bridge when you're ready, okay। Also, one thing we missed, drip trays should be in closed state. Anything else you want to add here? सेफ्टी में ठीक है, इतना ठीक है, आगे बढ़े प्रोसीजर। Yes, sir. ओके, now first of all check all bunker line manifold walls are in closed state, right? And also onto your what do you say, just एक मिनट देना गाइस, पानी पी के आता हूँ। So procedure, first of all ensure bunker line walls are closed। एक डायग्राम बना लेते हैं इसका, नॉर्मल सा, ठीक है। Suppose this is a bunker station, ठीक है। This is the drip tray, this is your bunker manifold,
This is port side, this is suppose starboard side. I'm drawing only one, हाँ ठीक है. उसके बाद आप डीजल का सेपरेटली करोगे and all those things. ठीक है, that is understood, I guess, isn't it? Yes, sir. This is port, suppose starboard. Okay, we are doing from the port side. ठीक है, starboard is wall is shut. So we have to make sure that these two walls are shut, isn't it? The bunker manifold, obviously. And then it comes to your engine room. ठीक है, engine room में कहाँ से connected रहता है ये? To your transfer line. What is this line? Transfer pump. And you have suppose tank over here, 4 starboard. I'm drawing only one tank. You have multiple, right? 4 starboard. Let us take one more. 6 starboard. 6 port. Then you will be having walls here. Normally एक ही wall रहता है ना आपका inlet and outlet के लिए, ठीक है? But there could be multiple also. Let us take suction wall differently and discharge walls differently, ठीक है? सर ये ट्रांसफर टैंक टू टैंक करेंगे, मींस सक्शन इज टेकिंग फ्रॉम द टैंक एंड डिस्चार्ज आल्सो बता रहा हूँ रुको जरूर बता रहा हूँ. ओके. यहाँ पे एक वेंट लाइन भी रहेगा आपके पास ना. ठीक है. And you also have one connection to fuel overflow tank, right? ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो. So what I'm going to do is I want to make sure first of all my line is completely filled. So उसको मैं fill करूंगा with same oil. ठीक है. Suppose what I have to do is I will close all these welds. ठीक है. This is closed. 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 Suppose I am taking the oil only from 4 port. ठीक है. I will use the transfer pump. What I will do is I have to make sure first of all my line is completely filled. So what I will do, I will first of all close all other walls. Agreed. This is closed. This is closed. Okay. So what I'm going to do is I'm going to close all these walls which I have shaded with pink color. You can name this 1 2 3 4 ऐसे करके. Okay. And I will use only one tank. I will start the transfer pump. Okay. And vent will be slightly open. As soon as the oil starts to come from the vent, what I will do, I will stop it from the remote location. Testing हमने पहले ही कर लिया है. Agreed. So what I'm actually doing is I am completely, this line will be completely always filled with your, it is always filled with your what? Fuel oil. Fuel oil. Okay. Now what I will do is I will shut these two walls also now. This is closed. This is closed. This is closed. Okay. Now everything is closed. So now only my line is completely filled with oil, right? पूरा oil से भरा हुआ है. Agreed? Bunker line. Okay. Now on this bunker line there will be one in the you can do it from the vent only, vent valve itself, or you can do it from some if some other line has been given, maybe separate line. ठीक है. Vent में आपने क्या करना है, hydraulic pump लगा देना. And can I, यहाँ पे आपका pressure gauge लगा हुआ है suppose. ठीक है. Now vent was closed. Now I have closed it. Once the oil coming out, I have attached a hydraulic pump here into this. Now if I can increase the pressure from this hydraulic pump or not? Yes, sir. Yes. I will increase it to how much? 1.5 the design pressure. Whatever the design pressure is, suppose design pressure is 4 bar, then it is 6 bar.
So I will increase the pressure to 6 bar. Agreed? सर हाइड्रोलिक पंप से कैसे प्रेशर एक्सीड करेंगे सर? हाइड्रोलिक पंप से ही तो करते हो यार। हाइड्रोलिक पंप आपके पास, क्या बोलूं अभी इसमें, कैसे आप पंप करोगे उससे आपका हाइड्रोलिक ऑयल जाएगा, वो प्रेशर इंक्रीज करेगा ना। पूरा लाइन तो भरा तो हुआ है आपका। हाइड्रोलिक ऑयल कहीं से सक्शन लेगा ना सर, पंप ये सर पंप। हाइड्रोलिक ऑयल का उसी के अंदर ऑयल रहता है ना, हाइड्रोलिक ऑयल। ये तो पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, देखो। will I will need so much hydraulic oil. Oil is not compressible. Agreed? As soon as you यस will सर। start pumping hydraulic oil यहाँ से, okay, the pressure will immediately rise. आपको सिर्फ इतना ही ऑयल चाहिए जो लाइन में रहे, इतना। दैट इज नॉट टू मच, राइट? अच्छा। आपने देखे होंगे यार, तो ऐसे सर लंबे लंबे पंप्स रहते हैं, राइट? ऐसे पंप्स होते हैं। एग्रीड? आई विल शो यू। हाँ। आई विल तो शो यू। मेरे सिर्फ पे इंलाइन टाइप बंकरिंग था सर, ये टेस्ट नहीं किए थे। आपके टाइम पे नहीं किया होगा, किसी और के टाइम पे किया होगा मे बी। ठीक है। नहीं सर, इंलाइन टाइप बंकरिंग था वो, दूसरे वेसल से बंकरिंग लेते थे चलते चलते। अरे अब मैं हर शिप के बारे में नहीं बोल सकता है ना। एक मिनट, एग्जॉस्ट हो। कैन यू सी, यहाँ पे ये हाइड्रोलिक पंप है एक। ठीक है, दिस इज हाइड्रोलिक पंप। एंड ऐसे पाइप लगा रखा है, सिमिलरली ऐसे आपको कनेक्शन करना पड़ेगा वहाँ। ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ सर। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। वंस यू स्टार्ट pumping this from the hydraulic oil, the pressure will raise to 6 bar. And once the 6 bar has come, okay, now this you will close the again the valve. ठीक है, ये valve को again आप you will close it. ठीक है, that valve you will again close it. So I have opened it first of all to purge it, and once the oil comes I will shut it. Then I will connect a hydraulic pump, again I will open the vent valve, and I will increase the pressure to 6 bar, and again I will close it. Is it clear? यस सर। Okay, now I will तो फिर से बोलिए सर, load अगर the, उसको अगर वो ओपन करेंगे तो फिर से ऑयल निकलने लग जाएगा, फ्यूल ऑयल। नहीं, आपने कनेक्शन कर दिया ना, पाइप लगा दिया ना दोबारा से, ये पाइप लगा दिया ना, कैसे आएगा फ्यूल ऑयल? अगर मैंने हाइड्रोलिक होज लगा दिया, फ्यूल ऑयल विल कम आउट। अच्छा, बंद उस साइड से वॉल में मैंने, एग्जिट हो जाएगा। या इन क्लोज्ड वॉल इटसेल्फ आई हैव कनेक्टेड द हाइड्रोलिक पाइप ना, इट विल नॉट कम आउट। ठीक है। नाउ आई विल इंक्रीज द प्रेशर टू 6 बार। एग्रीड? 1.5 द डिजाइन प्रेशर। ठीक है। नाउ आई हैव टू मेंटेन दिस प्रेशर फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स तक वी हैव टू मेंटेन दिस प्रेशर। ओके, आई हैव क्लोज द वेंट वॉल अगेन। ठीक है, आई एम नॉट इंक्रीजिंग एनी फर्दर प्रेशर आफ्टर reaching to 6 bar. I have closed the vent valve. Now I will go and I will check everywhere. Is there any leakage? First of all, why I am doing it with lube oil, or sorry, fuel oil or any oil? ठीक है, सपोज एयर से लीक की, एयर से टेस्ट किया मैंने आप। ओके, एयर से आई हैव इंक्रीज द प्रेशर 6 बार। इफ देर इज स्लाइट लीकेज ना, कहीं फ्लैंज से बिल्कुल हल्का सा लीकेज हो रहा है, द प्रेशर विल नॉट इमीडिएटली ड्रॉप। एग्रीड? यस सर। It will take a lot of time to drop. But hydraulic oil, even you know 2-3 drops leakage from somewhere, the pressure will immediately drop, because oils cannot be compressed, isn't it? That is why every pressure test is यस done सर। by oil. ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ऑयल से क्यों कर रहे हैं, एयर से क्यों नहीं कर लिए? सो बोलो, एयर विल स्टोर लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, and it will take a lot of time to release that energy. But hydraulic oil, because it is incompressible, it will store energy, but as soon as it leaks slightly also, it will release its all energy. Okay, is it clear? यस So the सर, ऑयल pressure लीकेज विल बी विजिबल ऑल्सो। and oil leakage is visible also, right? You will easily come to know kahan se leak hua. Agreed? यस। Okay, so that is the funda why we use only oils for testing. Okay, now 30 minutes, the pressure should not fall more than 1%. ठीक है, 1% से ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए इन एनी केस। ठीक है, इज इट क्लियर? नॉर्मली तो बिल्कुल भी नहीं होगा प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, इफ गैस्केट्स आर एवरीथिंग इज गुड, बट नॉर्मली नॉट लेस देन 1% से ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो सिक्स सिक्स यस। 6 बार का 1% निकाल लो। ठीक है, उससे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी लेस, इजंट इट? 5.94। हाँ, सो 5.94 क्या होता है? ऑलमोस्ट उससे नीचे नहीं नियर। आना चाहिए। हाँ, उससे नीचे नहीं आएगा। नाउ वंस यू आर डूइंग दिस
चेक एवरीवेयर, ठीक है, इंजन रूम में जाके देखो अंटिल योर ट्रांसफर पंप का ये जो वॉल्व है, ठीक है, यहाँ तक जाके देखो हर लाइन में, पूरे बंकर लाइन में, दैट देयर इज नो ऑयल लीकेज और समथिंग, ठीक है। एंड वंस द टेस्ट इज कंप्लीटेड, उससे पहले फोटोज वगैरह ले लो, ठीक है, प्रेशर गेज में फोटो ले लो एंड ऑल दोस थिंग्स टू सेंड इट टू द कंपनी एंड ऑल, बिकॉज आफ्टर दैट आपको स्टैंप भी करना है वहां पे, है ना, स्टेंसिल करना पड़ता है, ठीक है, ऑन द Yes, बंकर sir. manifold प्रेशर टेस्टेड ऑन सो एंड सो डेट ऑफ सो एंड सो प्रेशर, ठीक है। तो पर इसमें नाउ आप प्रैक्टिकली ये जो लाइन है ना ट्रांसफर पंप से जो मैनिफोल्ड की तरफ जा रही है, वो तो पूरी की पूरी लाइन में कवर्ड रहती है, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि किधर लीक है या नहीं है? ऑयल देखो, कहीं से भी जरा सा भी लीकेज हो गया ना, आपका प्रेशर इमिडिएटली ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, आप थोड़ा थोड़ा प्रेशर बिल्डअप करते रहो हाइड्रोलिक पंप से एंड टेक अ राउंड इन इंजन रूम, लाइन को ट्रेस तो कर सकते हो, एग्रीड, ठीक है। और हाँ आपको विजिबल कहीं से भी ऑयल लीक हो रहा है तो अब तो आपको विजिबल होता है ना, आपको दिख जाएगा ऑयल आता हुआ वहां पे, एग्रीड। And ओके। then you know that which gasket you need to replace or which pipe is need to be replaced, agreed. Now once the test is done, okay, now what you have to do is you have to release the pressure. How you are going to release the pressure? Are you going to open the vent valve? No, sir. तो सर So हमें this जैक is, एक्सेप्ट चाहिए। है ना, what I am going to do is either, देखो ये लाइन आपका कनेक्टेड रहता है विद व्हाट डू यू से, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो लाइन से भी कनेक्टेड रहता है, एग्रीड। बंकर लाइन का एक ओवरफ्लो टैंक से भी कनेक्शन रहता है, अदरवाइज सिंपली है, Yes, sir. आप किसी भी टैंक का सक्शन वॉल्व खोल दो, Yes, sir. ओके, और अदरवाइज यू कैन जस्ट ओपन द वॉल्व फॉर द ओवरफ्लो टैंक, ठीक है। इफ आई ओपन दिस वॉल्व, माय ऑयल विल रिटर्न बैक, ये इस वॉल्व को खोल Yes, दूंगा sir. तो ऑयल विल यस सर। रिटर्न बैक, ठीक है, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। वंस द प्रेशर इज बिलो, when the pressure is below 1 bar or something, then you can open the vent slightly, ठीक है, to check. Is it clear? Or Yes, just sir. open the line to your, this line is also connected to your overflow tank, okay. Just open this valve and all the oil will go back to your overflow tank. Is it clear? Yes, sir. यस सर। Now after this you have to make a bunker line pressure test certificate, okay. Your chief engineer will make it and chief engineer master will sign it. You have to paste it in the ECR, okay, and also in your bunker station, okay. Then stencils has to be made on the bunker manifold line that pressure test has been done on so and so date of so and so pressure, ठीक है। Yes, sir. यस। तो लिखवाने का जरूरत है, लिख लोगे इस पॉइंट्स को सारे को, लिख लिया सर। ठीक, सर ओके। खाली एक बार वो इसका स्टेटमेंट बता दीजिए ना वापस, व्हाई डू वी यूज हाइड्रोलिक ऑयल इंस्टेड ऑफ एयर? मतलब एयर विल, यू नो, एयर विल स्टोर लॉट ऑफ एनर्जी, ओके। एंड सपोज करो आपका एयर बोतल है, ठीक है, यस सर। सुन रहे हो, सपोज एयर हाँ बोतल है, सर। उसमें पूरा एयर है, ठीक है, दैट इज ऑफ 30 bar, but a small leak happens, will it 30 bar will drop immediately? नो सर। It will take a lot of time, है ना, it नॉट stores lot of energy, so you will not be come to know a very small leakage. Secondly, it is very difficult to find हुआ कहाँ से, agreed. यस But यस। hydraulic oil is not compressible, it also exerts equal pressure at all given points, ठीक है। जैसे मान लो एक कंटेनर में if I am filling a oil, pressurized oil, it is going to exert at any given point, हर जगह सेम प्रेशर एक्ट करता है, बट दैट इज नॉट इन द केस ऑफ एयर, ठीक है। बेंड्स हैं, बहुत कुछ है, एयर विल एक्सर्ट डिफरेंट प्रेशर, सो आई वांट कंप्लीटली 6 बार पे चेक करना ना, एग्रीड, ओके। Yes, sir. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज चेक इट विद लिक्विड, ठीक है, बिकॉज लिक्विड विल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट ऑल डायरेक्शंस एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है। दिस इज पास्कल्स लॉ, एक बार पास्कल्स लॉ पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। यस। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसमें, ठीक है, पास्कल्स लॉ एक बार आप देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। वी यूज लिक्विड ओनली फॉर टेस्टिंग, ठीक है। एंड सेकेंडली, लिक्विड इज इजिली विजिबल देन योर एयर टू फाइंड आउट विच इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ योर लीकेज। इज इट क्लियर?
यस सर। चलो, सो दैट वाज योर प्रेशर टेस्ट। आई होप समझ गए होंगे। एक एक दो क्वेश्चन देखे मैंने, कई बार पूछा हुआ ये चीज है ना, माइट भी यस सर। आपसे देखा होगा हम्म। प्रेशर टेस्ट।